स्पीडी करंट अफेयर्स का ये लास्ट वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 751 से लेके 850 तक देखेंगे। ये बिहार पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस के लिए एक रैपिड रिवीजन सीरीज़ के जैसे है जिसमें क्वेश्चन और आंसर पढ़ता जाता हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके। आप चाहें तो इस वीडियो को 2x स्पीड में भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वेयर हैज़ द प्रोजेक्ट टू डेवलप द इंडियाज़ फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इको पार्क हैज़ बीन लॉन्च्ड। होलाम्बी कलान दिल्ली। At the 72nd Miss World pageant, Hyderabad, who was given the humanitarian award for philanthropic work during the COVID-19 pandemic, Sonu Sood, with whom has India recently launched a joint research initiative on marine pollution and green hydrogen, European Union, which institute has developed an indigenous high pressure non porous polymer membrane for desalination seawater, DRDO, who has recently become India's latest and 86th Grandmaster, Sri Hari LR, which anniversary of its merger with the India will Sikkim celebrate on the May 16, 2025 50, which educational institution has recently announced the establishment of its first overseas campus in Dubai, Indian Institute of Foreign Trade IIFT, और IIM अहमदाबाद का भी पहला कैंपस दुबई में ही खुला है। In which stadium has the Mumbai Cricket Association recently inaugurated the stands named after Rohit Sharma, Sharad Pawar and Ajit Wadekar? इसका आंसर आपका हो जाएगा वानखड़े स्टेडियम। What was the United Nations projected India's estimated economic growth rate to be for years 2025? 6.3। ईयर 2026 के लिए 6.4 था। डिफरेंट संस्थाओं के द्वारा, जैसे इकोनॉमिक सर्वे ने 6.4 बोला था, एनएसओ ने 6.4 बोला था, और ईयर 2025 के लिए यूनाइटेड नेशन ने क्या बोला था? 6.3। तो दोनों अलग अलग डेटा है, याद रखिएगा, और अलग संस्थाओं ने दे रखा है, अलग अलग ईयर का है। इन विच स्टेट डिड द इंडियन आर्मी एंड एनडीआरएफ कंडक्ट द राहत एक्सरसाइज? असम। इंडिया हैज़ सरपास विच कंट्री टू बिकम द मोस्ट preferred market for investment in Asia? Japan. JNU and Jamia Millia Islamia have suspended academic agreement with the which country? Turkey. Which state has won the most medals in the Khelo India Youth Game 2025? Maharashtra. Scientist Mariangela Hungaria of which country has received the World Food Prize for year 2025? Brazil. In which state did the India successfully test the Bhargav Astra system? Odisha. Where has the Uttar Pradesh first semiconductor unit been established? Jewar, Noida. Who has been appointed as the new chairman of the Union Public Service Commission? Ajay Kumar. In which country has the world first commercial e-methanol plant started? Denmark. Which Olympic medal winner has been given the honorary rank of Lieutenant Colonel in the Territorial Army? Neeraj Chopra. In how many cities in India has chip-enabled biometric e-passport service has been launched? 13. On which date has central government announced the celebration of Ayurveda Day? September 23. Who among the following is a woman of Indian origin who has been made a foreign minister by Canadian Prime Minister Mark Carney? Anita Anand. To which neighboring country has India provided financial assistance of $50 million? Maldives. Due to the Sharia law, which country has been banned the chess? Afghanistan. अफगानिस्तान ने चेस को बैंड कर दिया सरिया लॉ की वजह से। Which state has adopted the policy of giving the full exemption in the property tax to active the defense personnel? आंध्र प्रदेश। एक्टिव डिफेंस पर्सनल के लिए प्रॉपर्टी टैक्स में फुल एग्जेम्पशन दिया है आंध्र प्रदेश ने। इन विच सिटी डिड द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनाग्रेट द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी? लखनऊ। ब्रह्मोस मिसाइल प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ शुरू हुई है? लखनऊ में। विच टू स्टेट्स हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू जॉइंटली स्टार्ट द ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट? महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश। विथ whose collaboration has the Uttar Pradesh government launched the UP Agreed and AI Pragya initiative to strengthen the economy? World Bank. वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ रिलीज द बुक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा द पीपल्स स्टोरी माई ऑटोबायोग्राफी ऑथर्ड बाय द गवर्नर ऑफ विच स्टेट? हरियाणा। वॉट न्यू नेम हैज़ द झारखंड गवर्नमेंट रिसेंटली गिवन टू द डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी? वीर बुद्धू भगत यूनिवर्सिटी। रिसेंटली वॉट परसेंटेज स्टेक इन यस बैंक हैव SBI and 7 other banks sold?
20%. In response to the Operation Sindoor, under what name did the Pakistan launch a campaign against the India Operation बुनियान उल मरसूस? याद रखिएगा क्योंकि बिहार पीछे जो है पुराने करंट अफेयर उठा के पूछता है, तो लास्ट ईयर का है तो पूछ भी सकता है कि ऑपरेशन बनियान उल मरसूस ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है और पाकिस्तान ने लॉन्च किया था इंडिया के अगेंस्ट। विच कंट्री हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नेशनल लेवल क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम? भूटान। एट वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस 2025 which country has been honored as the country champion? India. Under what name has GRSE recently handed over the first indigenous ASW anti-submarine warfare shallow watercraft to the Indian Navy? Arnala. By what name will the Roman Catholic Cardinal Robert Francis Prevost now be known? Pupil Leo 14. Which Indian cricketer has announced the retirement from the Test cricket? Virat Kohli and Rohit Sharma, both A and B. Which Bangalore-based AI startup has launched the Bulbul V2 text-to-speech model? Sarvam AI. बुलबुल V2 किससे रिलेटेड? सर्वम AI से टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। Which country has unveiled a commemorative plaque at its embassy in New Delhi for Biju Patnaik contribution in the World War II? Russia. What is the India's rank in the Human Development Report 2025? 130. Which two female officers led the press conference for Operation Sindoor? Colonel Sophia Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh. Sophia Qureshi and Vyomika Singh. Colonel थी, Wing Commander. Under which operation did India conduct an airstrike on the 9 terrorist hideouts in Pakistan? Operation Sindoor. In which city has Union Minister of Education approved the establishment of an off-campus center of IIFT? Gift City, Gandhinagar. एक ऑफ कैंपस सेंटर बना है IIFT का, कहाँ बना है? गिफ्ट सिटी, गांधीनगर, और दुबई में भी खुला है एक सेंटर इसका। विच with which country has India signed a historic free trade agreement? United Kingdom. Who has recently taken oath as a 10th Chancellor of the Germany? Friedrich Merz. Which state has announced the launch of the Adi Shakti mission for women empowerment and Yashwant Vidyarthi Yojana for the student? Maharashtra. Who is the first Indian advocate to be honored with the Medal of Honor award at the World Law Congress held in Dominican Republic? Bhuvan Ribhu. The Bhakra water dispute between Punjab and Haryana, which was recently in the news, pertains to the water sharing of which river? Satluj. Who among the following has been awarded the Pulitzer Prize 2025 for the public service? Kavita Surana. Which state government has recently launched the Pandit Lakshmi Chand Kalakar Samajik Samman Yojana to provide financial assistance to senior artists? Haryana. Which Indian city has WHO included in the global network for the age-friendly cities and communities for its age-friendly policies? Kozhikode. WHO ने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ एज फ्रेंडली सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़ की लिस्ट में किस इंडियन सिटीज़ को डाला है? कोझिकोडे को। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। Recently, which country has become the first in the world to develop the genome edited rice variety? Genome edited rice variety किसने डेवलप की है? इंडिया ने डेवलप की है। चाइना वॉन द सुधीरमन कप बैडमिंटन title for the record 14th time by defeating which country's team? South Korea. Under what name has the Election Commission recently announced the launch of a new app created by integrating more than 14 existing apps? ECI Net App. Election Commission of India Net App या ECI Net App. In World Press Freedom Index 2025 published by Reporter Without Border, what is India's rank among the 180 country? 151. वैसे मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसके अंदर कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सी रिपोर्ट निकालता है उसका पूरा जानकारी रहेगा। Which country has recently approved the sale of the Hawkeye 360 technology to enhance the India's maritime surveillance capability? America. Recently, which city was the first World Audio Visual and Entertainment Summit Waves 2025 organized? Mumbai, India.
who has recently successfully tested the indigenous stratospheric airship platform from Shuhar in Madhya Pradesh, DRDO. Jawans of which paramilitary force have recently set a record by successfully ascending the Mount Makalu, the world's fifth highest peak (ITBP), which country has become the 123rd member to join the International Solar Alliance, Angola. On the occasion of World Press Freedom Day, which country's historic newspaper La Presse has recently been honored by the UNESCO with the Guillermo Cano World Press Freedom Prize 2025, Nicaragua, in which city has the establishment of a country first foreign university centric Edu City recently been announced, Navi Mumbai, under which operation has the CBI taken action against an international cyber crime network involved in the child sexual abuse material Operation Hawk. The Maharashtra government has successfully retrieved the prestigious sword of the founder of the Nagpur Bhosle dynasty from an auction in London. Who among the following was he? Raghuji Bhosle one. याद रखिएगा important है. Which municipal corporation has recently issued the India's first certified green municipal bond, Ghaziabad, who has recently been appointed as the head of the National Security Advisory Board, Alok Joshi. Japan has announced the inclusion of which sports in the Asian Games to be held in the Aichi and Nagoya prefecture in the year 2026. Cricket. Which state has launched India's first AI powered real time warning system? Madhya Pradesh. India's first AI powered real time warning system मध्य प्रदेश में लॉन्च हुआ है. The United Nations has launched the VOTAN as a global platform for victims of terrorism, supported by which country? Spain. To which Sanskrit scholar and famous poet lyricist has President Draupadi Murmu presented the 58th Gyanpith Award? जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला था 2025 का, गुलजार को. Recently, Prime Minister Narendra Modi inaugurated which of the India's first deep water container transshipment port? Vizhinjam International Port, Trivandrum. Recently, which cricketer from Bihar has set the record for debuting in the IPL at the youngest age, 14 years? Vaibhav Suryavanshi. Recently, who has been appointed as the chairperson of the Athletes Commission of Indian Weightlifting Federation? Mirabai Chanu. मीराबाई चानू को चेयरपर्सन बना दिया गया एथलीट कमीशन ऑफ इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का. बढ़िया. विच इज़ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश अ सीनियर सिटीजन कमीशन? केरला. माउंट लेवोतोबी वॉल्केनो विच हैज़ बीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज लोकेटेड इन विच कंट्री? इंडोनेशिया. माउंट लेवोतोबी वॉल्केनो इंडोनेशिया में है. इन विच प्लेस इन असम हैज़ द यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स नामरूप 4? तो नामरूप में है ये, असम में. ठीक है. ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स, असम, नामरूप. Which of the following countries is not included among the countries participating in the novel exercise ECME 2025 between India and African countries? घना. मेडागास्कर, डिजबूती और कैमरोस ने पार्टिसिपेट किया, घना नहीं किया था. In which state has the PM Modi recently laid the foundation stone for a new terminal building at the Maharaja Agrisene Airport, Haryana? Which country recently honored the mega star Sri Chiranjeevi with the Lifetime Achievement Award? Britain. Recently, Aries Silk खासी हैंडलूम प्रोडक्ट ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द GI टैग? मेघालय. तो मेघालय में एरी सिल्क और खासी हैंडलूम प्रोडक्ट को GI टैग मिला है. तो एरी सिल्क कहाँ पाई जाती है? मेघालय में, याद रखिएगा. Who recently set the record for highest individual score by an Indian in IPL history? Abhishek Sharma. Where did the Chief Minister of the West Bengal, Mamata Banerjee, recently inaugurate the Jagannath Temple? Digha. Which ancient book have recently been included by UNESCO in the Memory of World Register? भगवद गीता और भारत मुनीस नाट्यशास्त्र दोनों को
मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ऐड किया गया है यूनेस्को द्वारा? भगवद गीता और भरत मुनि का नाट्यशास्त्र। हु रिसेंटली वॉन द टाइटल ऑफ द फर्स्ट मिस्टर ग्लोब इंटरनेशनल 2025 हेल्ड इन चाइना? अनुराग गर्ग, इंडिया। Recently, the 172 anniversary of first railway in the country was celebrated. When did the first railway in India run from Boribandar to Thane in Maharashtra? April 16, 1853. According to the data, which country has recorded its hottest year so far in the year 2024? Tanzania. Who has recently been appointed as the 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? बी आर गवाई। 53rd जो है वो सूर्यकांत हैं, जस्टिस सूर्यकांत। इंडियन रेलवे हैज़ रिसेंटली इंस्टॉल्ड द कंट्रीज फर्स्ट ट्रेन ATM इन विच ट्रेन? मुंबई मनमाड पंचवटी एक्सप्रेस। बाय डिफीटिंग whom हैज़ द पंजाब won the title of Hockey India Senior Men's National Championship 2025? Madhya Pradesh. Where has the Union Minister of State Dr. Jitendra Singh recently launched the India's first high altitude atmospheric and climate research center, Himalayan Climate Center, Natha Top, Udhampur? Which city in America has honored to celebrate April 14 every year as a B.R. Ambedkar Day? New York. Important question, याद रखिएगा। The Uttar Pradesh government has renamed the Zero Poverty Scheme after whom? Dr. B.R. Ambedkar. ये भी important है। Which has recently become the first state to implement the sub-categorization of scheduled caste? Telangana. Gaj Singh has been announced as the official mascot of the Khelo India Youth Games in year 2025. In which of the following state is this sports event is scheduled to take place? बिहार। मतलब हो चुका है, लेकिन बिहार में हुआ था ये। On the occasion of World Quantum Day, Bengaluru-based startup QPIAI has launched India's most powerful quantum computer so far. QPIAI Indus इंडिया का मोस्ट पावरफुल क्वांटम कंप्यूटर है। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द बांदा साहगढ़ फॉरेस्ट एरिया इन सागर डिस्ट्रिक्ट एज द 25th सेंचुरी ऑफ द स्टेट, नेमिंग इट डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सेंचुरी? मध्य प्रदेश। By what name was fourth tri-service joint military exercise between India and United States conducted in Visakhapatnam, Kakinada, मध्य प्रदेश? टाइगर ट्रिम्प एक्सरसाइज टाई सर्विस एक्सरसाइज है, किसके बीच होती है? यूएसए और इंडिया के बीच में होती है। किस नंबर की हुई थी? 4th नंबर की हुई थी, 2025 में हुई थी। कहाँ हुई थी? विशाखापट्टनम एंड काकीनाडा में। विच कंट्री रिसेंटली अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ Interpol governing body? UAE. Which team did Mohun Bagan Super Giant defeat to win the Indian Super League Football 2024-25 title? Bengaluru Football Club FC. Which former England fast bowler has been honored with the knighthood for his service to cricket? जेम्स एडरसन को नाइटहुड की उपाधि दी गई है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से आपके सारे के सारे 850 क्वेश्चन स्पीडी करंट अफेयर्स के हो गए हैं। ये रैपिड डिवीज़न सीरीज़ थी, आप इसको बढ़िया देखिए, ये आपके वनडे एग्ज़ाम में भी काम आएगा। मोस्टली तो मैंने बिहार पीसीएस और यूपी लोअर पीसीएस के पर्पज़ से बनाया था, बट ये बाकी पेपर में भी आपके काम आएगा। इसको बार बार 2-3 बार 4 बार देखिए तो आपको अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी और पेपर में काम आएंगे। चलिए, अभी मैं और भी वीडियोज़ ऐसे लेके आऊँगा।